नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुणाचल मिरर। मैं इस वक्त लोअर सुबनसिरी के जीरो में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है नेशनल लेवल का वर्कशॉप हो रहा है। टॉपिक जो है इकोसिस्टम सर्विसेज इन एग्रीकल्चरल लैंडस्केप ऑफ हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया है। और इसके लिए जो है भारत के अलग-अलग जगहों से जो है बड़े-बड़े दिग्गज साइंटिस्ट आए हुए हैं इस टॉपिक पर डिस्कशन करने और अपना प्रेजेंटेशन देंगे। तो चलिए देखते हैं इस वर्कशॉप के कुछ झलकियाँ। I, on behalf of the organizing committee, have the pleasure of welcoming you to this very important workshop. Today our workshop is very unique and it is unprecedented because this is for the first time in India a national workshop on the topic host this historic event. You know why discussion and deliberation and workshop on ecosystem services is important for Himalayan regions, especially for states like Arunachal Pradesh. From the ATARI tribes, and ATARI tribes is the only tribe in the world. They are worshiping the nature today, and they are totally maintaining their cultures. And if you are become success to maintain your culture, certainly you can save your agriculture. And by the maintaining agriculture and agriculture, there will be no doubt, there will be no questions, particularly on the ecosystem services. So first there is a respect, and that part you must learn from the ATARI tribe. मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इगम बसर जो कि डायरेक्टर है हॉर्टिकल्चर एंड रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए उनसे इस वर्कशॉप के बारे में जानते हैं। सर, आपका स्वागत है। Thank you. तो सर, इस वर्कशॉप के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि अलग-अलग जगहों से बहुत सारे साइंटिस्ट आए, एमिनेंट साइंटिस्ट आए हैं। और तो वर्कशॉप में कितने डेलीगेट्स हैं और इस वर्कशॉप का जो मेन टीम क्या है उसको थोड़ा सा बता दीजिए हमें। ये है एक नेशनल वर्कशॉप ऑन इकोसिस्टम सर्विसेज इन हिमालयन रीजन, स्पेशली इन एग्रीकल्चर लैंडस्केप में। दिस प्रोग्राम इज बेसिकली इट इज ICAR program, Indian Council of Agriculture Research and Research program. There is their regional office at Guwahati. It is called ATARI. So ATARI is organizing this program on ecosystem services. Ecosystem services is a very new, topic, and this is for the first time in India, national workshop on ecosystem services is being organized here in Ziro. Delegates are from basically from ICAR. Many ICAR dignitaries, big officers are coming. They have already come. This is now second day of the workshop. The Deputy Director General level officer has come. There are more than 4 additional Director General level of officer and their equivalent has come. And 20 numbers of director and equivalent from ICAR institutes have come, and along with that, many professors and scientists, eminent scientists from all over this country has come, and even our own officers, directors of agriculture and allied department like horticulture, animal husbandry, fishery. They have all have come with their senior officers and district level officers like DBO, DHO, and all from all over the state have come. And with that, the participants are also from the KVKs, various KVKs in the state. So this is basically to discuss about the ecosystem services in northeast region, Himalayan region, and particularly Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh, and we have chosen this Ziro as a venue because this Ziro is still regarded as one of the tribe who protect environment, who protect ecology. You see around not many greeneries you will find. All the forests are there. They do not practice shifting cultivation. They only practice this settled rice cultivation. So still their forests are intact.
a lot of small springs, stream water still flows. In other places like in our place and in the eastern Arunachal Pradesh, like Tirap and Chaman, because of heavy shifting cultivation, which is known as slash and burn cultivation, our traditional cultivation, because of that, a lot of streams and spring water sources have dried up. But in Zero, it is the situation is not like that. Still there, of course. Now we see that a lot of infrastructures, build-up structures, have are seen on the paddy field. That is not a good sign, and some sort of logging are also happening here. But by and large, Zero is still good in terms of nature conservation. So this national workshop is organized here basically to show other people from outside that if we are to plan for ecosystem services strategies in the future, we can learn from Zero also. That is the main reason why we have come here. तो सर इसका वर्कशॉप का मेन जो टीम को भी थोड़ा सा बता दीजिए. Target na? This is to study about and deliberate upon the ecosystem services. Like when we say ecosystem services, it inclusive of all services that nature gives for welfare of human being. For example, nature gives us this water. Food also comes from nature. Na? It comes from forest. We get oxygen from forest. We get medicinal and other, there's woods from forest. So entire, and then if there is no forest, if there is no ecosystem, then how do we regulate this rainfall? We cannot regulate rainfall by ourselves. No, it is regulated by the ecosystem. So all these services are included in ecosystem services, and there are values of ecosystem services. For example, in Arunachal Pradesh, we have huge forest resources. Huge forest resource. It is highest in India in terms of highly dense forest. We have total of more than 66,000 square kilometer of forest, and then 21,000 square kilometer of highly dense forest. So our forest is regarded as carbon sink of India because it has got more than 1,000 metric ton of carbon stock. So if we calculate all the ecosystem services, as I have said earlier, of Arunachal Pradesh, it alone is more than 1,518 billion rupees per year. So what about other Himalayan states? So if we include all other Himalayan states, then ecosystem services provided by these regions is immense. It's a huge. So what we are telling here, what we aspire here, what we want to discuss here is that, like in Arunachal Pradesh, 80% of forest belongs to farmer people, the community. So when communities are maintaining this forest, and when these forests are giving that much ecosystem services to the nation, then why our people who are maintaining this forest should not be given proper compensation for maintenance of ecosystem services? Like they should be given payment by the user. User means we do not drink all the water by ourselves. Our rivers flows out from our forest, but it goes to Assam, it goes to West Bengal, then it goes to Bangladesh. So this ecosystem services is not serving only; it is serving entire world. And then our forest sequesters carbon dioxide, which is produced by other states. Now we do not have much development here, especially industrialization here. Industrialization is happening in other states, and those carbons, the fumes uh, released in atmosphere are sequestered. It is filtered by our forest. It is called sequestration, carbon sequestration. So it is
carbon dioxide is converted into oxygen, and this oxygen we Arunachali people not only we are breathing it. It is for entire world. So therefore, the world should be grateful to the state like Arunachal Pradesh, which has maintained such a vast forest. So we want that key in acknowledgement of that there should be payment. So there has to be mechanism for payment. So far there is no mechanism for payment to the farmers. So that mechanism has to be worked out. So therefore the intention of this workshop is to discuss and brainstorm on this very important topic so that we can find out the mechanism of ecosystem service payment. That is one aspect. Another aspect is our agriculture. Our agriculture is totally depend on ecosystem services like water. Huh. We cannot talk about cultivation without talking about water. आप पानी खेती करेगा बोले से पहले तो पानी का ही तो चर्चा करना पड़ेगा ना। पानी का चर्चा होगा, पानी होगा, तब जाकर हम पानी खेती करेंगे। तो जब हम पानी का चर्चा करेंगे तो फिर हम जंगल का चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि पानी फिर जंगल से फिर आना है। तो इसलिए अभी इसमें अब आज हमारा ये वर्कशॉप में हम लोग ने ये बोल रहा है कि फार्मर्स को कि आप सारा का सारा इकोसिस्टम सर्विस को जो नेचर ने देता है उसको रिकॉग्नाइज करो। आपका एग्रीकल्चर के लिए भी ये सारा इकोसिस्टम सर्विसेज बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको साथ में लेकर के आपको चलना पड़ेगा। पानी को बचाते हुए, जंगल को बचाते हुए आपको एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। वो है आज का ये। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सियांग बोरांग, जो कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट है और लोकल ऑर्गेनाइजिंग टीम है। तो चलिए उनसे जानते हैं कि इस वर्कशॉप में उन लोगों का जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से रहा है। तो हम लोग का ये जो मैनेजमेंट टीम ये वर्कशॉप के लिए, नेशनल वर्कशॉप के लिए हम लोग का बहुत डिफरेंट, वी हैव सब कमिटीज़। तो सब कमिटीज़ में है रजिस्ट्रेशन कमिटी, ट्रांसपोर्टेशन कमिटी, एकोमोडेशन कमिटी, कैटरिंग कमिटी एंड दिस फूड एंड लॉजिंग कमिटी। तो हर ये ऑल ओवर इंडिया से आ रहा है, साइंटिस्ट लोग आया है। तो इसके लिए इतना बड़ा चीज़ को एक आदमी या सिंगल आदमी नहीं कर पाता, इसलिए हम वी हैव मेड वेरियस कमिटीज़। तो ये साइंटिफिकली तो बहुत बेनिफिशियल है, ये जो है हमारा एरिया के लिए, डिपार्टमेंट के लिए या फिर ये लोकल फार्मर्स के लिए। लेकिन अदर देन डेट ये हमारा ये कम्युनिटी जो हम लोग ये जीरो में कर रहा है, तो यहाँ का रूरल इकोनॉमी के लिए भी इनडायरेक्टली वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज ये ऑल ओवर इंडिया से आया है। तो दे हैव केम फॉर टू पर्पस, एक तो ये अटेंड करना है, दूसरा तो टूरिज्म के लिए आया है। दे हैव कम ऑल्सो टू सी द प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ जीरो। तो उसी तरह हम लोग यहाँ वो लोग खान पीन के लिए जो लोकल हम लोग कैटरिंग टीम रखा, वो लोग को भी इकोनॉमी में हेल्प हुआ। लोकल जो टैक्सी ये लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग यहाँ का लोकल यूथ्स का जो टैक्सी सर्विस है उसको हम लोग वो किया, तो वो लोग को भी इनडायरेक्टली बेनिफिट मिला। और उसके बाद अदर देन डेट जो ये साइट सीइंग के लिए जो टूरिज्म एरियाज है वहाँ भी माने ये इकोनॉमी आया है, क्योंकि हम वी आर बाइंग टिकट्स एंड ऑल टू सी दैट प्लेसेस, जैसे सी लेक है, वो सब को देखने के लिए हम लोग टिकट बाय करते हैं। तो वो भी इनडायरेक्टली उसमें आता है। उसके बाद अदर देन डेट एकोमोडेशन में भी, जैसे यहाँ में इतना लोकल लोग अपना होटल बना के रखा है ना, तो वहाँ में हम लोग लॉजिंग दिए, तो इनडायरेक्टली वो लोग को भी हम लोग ये कस्टमर ला के दे रहे हैं। तो आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश शुड do such types of workshop again and again in various districts of Arunachal Pradesh, because ये सिर्फ scientifically important नहीं है, it is important for rural economy also. So हम लोग का local को भी benefits होता है indirectly.